Hello my friends, in this video, we are going to break down aircraft communication systems, what they are, how they work, and why they're critical to aviation safety. We'll look at the main types of communication used in modern aircraft, including voice, data link, and emergency systems, and explain them in a simple, easy to understand way. एयरक्राफ्ट टू एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरक्राफ्ट के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन मैटर करता है। आइए बताता हूँ कि वाई मैटर करता है। फर्स्ट, प्रिवेंट कोलिजन, सेकंड, मैनेज एयर ट्रैफिक फ्लो, थर्ड, इट प्रोवाइड्स नेविगेशन एंड वेदर अपडेट्स, फोर्थ, हैंडल्स इमरजेंसी। टू अब आपको पता चल गया होगा ये कितना मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट। कितने टाइप के कम्युनिकेशन यूज होते हैं एयरक्राफ्ट में। पहला, एयर टू ग्राउंड, दूसरा एयर टू एयर, तीसरा डेटा कम्युनिकेशन, चौथा ऑनबोर्ड कम्युनिकेशन, पांचवा इमरजेंसी कम्युनिकेशन। वन बाय वन थोड़ी जानकारी ये सारे कम्युनिकेशन की लेते हैं। एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन यूज्ड बिटवीन पायलट एंड एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। 1. VHF रेडियो फॉर वॉइस कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग नॉर्मल फ्लाइट। VHF इज बैकबोन ऑफ मोस्ट फ्लाइट। VHF रेंज होता है 118 मेगाहर्ट्ज से 137 मेगाहर्ट्ज। HF रेडियो used on long distance oceanic flight where VHF doesn't reach. SATCOM, satellite communication, offers global coverage especially over oceans where VHF or HF might be limited. Air-to-air communications, used between aircraft, help with traffic awareness and coordination, often automated rather than voice-based. Example, collision avoidance alert data communication, instead of voice, information is sent as digital message. ACA, aircraft communication address and reporting system, send flight data, weather updates, maintenance information. CPDLC, controller pilot data link communication, text-based message between pilot and ATC. Benefits, fewer misunderstandings, less radio congestion. Onboard communication, communications within the aircraft, pilot to co-pilot, pilot to cabin crew. Intercom system and alert system. Intercom crew to ground crew, ये उस होता है on ground during towing or engine startup. Emergency communications, used in urgent situations. Emergency frequency, like 121.5 MHz, distress signal, Mayday Mayday, PAN आइए अब डिस्कस करते हैं की components of communication system. Key components of communication, antenna, transceiver, audio panel, microphone और speaker. जितने VHF होते हैं उतने एंटेना फिटेड होते हैं एयरक्राफ्ट के आउटर स्ट्रक्चर पे। हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल कैटेगरी एयरक्राफ्ट में जनरली 2 वोल्ट्स HF लगे होते हैं। लार्ज एंड हैवी कैटेगरी एयरक्राफ्ट में 3 वोल्ट्स HF लगे होते हैं और उसके एंटेना भी 3 लगे होते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं इसका लोकेशन। VHF एंटेना फ्यूजलाज के टॉप एंड बॉटम पे लगा होता है। VHF एंटेना ऐसा दिखता है। यह है ट्रांसीवर। पायलट अपने हेडसेट के माइक्रोफोन से कुछ बोलता है, मींस जनरेट इनपुट होता है। ऑडियो इंटीग्रेशन सिस्टम इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट यूनिट प्रोसेस दिस वॉइस एंड ये ट्रांसीवर कन्वर्ट दिस सिग्नल एंड सेंड इट थ्रू अप्रोप्रिएट एंटेना टू ग्राउंड स्टेशन। सेम वे ट्रांसीवर पिक अप इनकमिंग सिग्नल एंड रूट्स टू द पायलट हेडसेट। और ऐसे कम्युनिकेशन होता है। आई होप आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।